Assalamu alaikum everyone. Can you guys hear me? Walaikum Assalam. Okay, first of all, I'm really sorry for the delay today. So I just reached back some time ago. So first was late ho gaya. So this is supposed to be our last session today. So we're going to be building on building on the exercises doing last time. So let me share my screen first and remind you of what we were doing because it's been some time. We had a break darmiyan mein. So we'll need to start over again and try to see where we were exactly and what we need to do after that. Okay, so let me share my screen. I think it's still not visible. Still not visible. All right. So yes. So you should be able to see my screen now. जहाँ पे आपको ये एक्सेल शीट नजर आ रही होगी जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे. If you remember, ये PDF फाइल थी exploratory data analysis with visualization part 2 जिस पे हम काम कर रहे थे. If you open your classroom, so for those of you especially who were not here in the last class, what you need to do is you need to log into classroom. उसमें classwork tab में आप देखेंगे you have session 12 there. सेशन 12 के अंडर आपके पास एक पीडीएफ फाइल होगी और एक एक्सेल फाइल होगी. You have to basically download both of those files. ठीक है. So there were some exercises from there that we are already done with and we need to complete this today. ठीक है. That's the major goal for today. And apart from that, there's just some small things that I also want to discuss. एक data validation से related एक चीज है वो discuss करना है और जो है yes, that's pretty much it what we want to do. So spark lines का हम देखेंगे end पे. If we get some time, we also do that. Data validation is okay, no, not data validation. We would actually want to do, yeah, so spark lines right there. So just looking at the outline there, and there are, yes, there's just one thing that we are missing from there apart from this, and that's the spark lines thing. Okay, but that's a very small thing. वो pivot tables के साथ ही हम जो है एक चीज इसको discuss करेंगे. All right, so let's get back to this. I think you cannot see my other screens for some, I've not shared the other screens. Let me share it again so you can see the other ones as well. Yes, so you should be able to see my PDF file now. So this was the file that we were working on last time. ठीक है. इसमें हमने इसमें जो first PDF था, the first handout था, उसके अंदर we did some relatively simpler exercises. But in this one, what we were doing was we were actually looking at different groupings. For example, कि आप जो है अपनी rows के अंदर जो data होता है उसको group किस तरह से कर सकते हैं. That was one thing that we were looking at. Then we also looked at calculated fields at some point. के आप किस तरह से अपने tables के अंदर इस तरह से new fields add कर सकते हैं. For example, यहाँ पे हमने किया था in one of those exercises. Yes, in this exercise हमारे पास कुछ data जो है वो already आ रहा था वहाँ से from our table. So remember we had two data sets. एक चपली कबाब वाला data set था जिसके अंदर वहाँ पे हमारा एक survey का data था और उसके survey से related लोगों के responses थे. और दूसरा data था KKBL. So this is from actually from a bottling, not a bottling company, but a beverages company. And उसका हमने नाम change किया हुआ Ken Cola Beverages Limited. But of course, I think it's pretty easy to guess which one this is. उसका data थोड़ा सा manipulate करके, it's not the exact data, but थोड़े से numbers change करके
ताकि because calculator is of course confidential, but it allows us to do most of the different kinds of analysis that the company does itself as well. So इससे हम बहुत सारी चीजें जो है कर रहे थे. So can anyone remind me where exactly we were? So हमने calculated fields हमने discuss कर ली थी last time. Time series data इस पे हमने कितना cover किया था? Does anyone remember? Shagufta or Shehzad. I think these were the only people present in the last session for some reason. But now today, at least the turnout is better. So yes, do you guys remember last time हम क्या कर रहे थे? In any case, I think what I would want to do is I would actually want to review this thing as well, because this is quite useful actually. So those of you who've just joined today, I will want it to do it. I'll want to do it again for you guys as well. Okay, this is actually going to be quite useful, quite a useful concept. So हम इसको दोबारा से review कर लेते हैं. We do have some time today because we don't have a lot to cover. There were just a few things left. So what we'll try is we will try to cover some of these things again as well. So let's look at this exercise. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम सर शुक्रिया. हमने पॉइंट 4 से स्टार्ट करना है ग्रुपिंग फील्ड्स. Grouping fields. Okay, so we were done with this part then. Time series wala, weeks wala. So we're talking about this grouping fields. Okay, all right. What I'll do is I'll start from this to just offer a quick review at least. थोड़ा सा आप लोगों का review हो जाए. Last time जो कर रहे थे वो चीजें भी, और जो लोग नए आए हैं were not here last weekend whenever we had classes last time, तो उनको भी एक तरह से थोड़ा सा review मिल जाए इसका. ठीक है? So we have time, so we can do it. So let's start from this. Okay, so time series data जो है बहुत ज़्यादा देखते हैं in practice. So time series का मतलब basically when you have data, when you have timestamps with your data, right? So आपको किसी भी form में हो सकती हैं. You could have data up to seconds. You could have data up to hours. You could have daily data. You could have monthly data, yearly data. It could be anything of that sort. लेकिन इसका मतलब ये होता है कि you have a date variable in your data. ठीक है? So date variable आपके पास data के अंदर है, so that's going to be a time. So that's generally going to be a time series data. मतलब एक तरह से time के साथ साथ vary कर रहा होता है. For example, if you look at this, the survey data, this is not time series data. यहाँ पे हमारे पास कोई date variable नहीं है, कोई date के साथ ये data change नहीं हो रहा. कोई नई information हमारे पास day wise या month wise नहीं आ रही है. So it's not sort of dependent on time, this data. ठीक है? KKBL जो आपके पास दूसरा data है, you can see we have a date variable here. So if we have information about, if I were to apply a filter here, so यहाँ पे filter apply करता हूँ, try to look at the values. So you see we've got data from 3 years here. So 3 years के अंदर भी we are starting from January 2012, and then no, in fact we're starting from January 2010, and we are going until December 2012. तो हमारे पास 3 years का data है, और 3 years का data भी कैसे? We've got daily data. So हमारे पास हर day की information है, और हर day के अंदर भी जो है आपके पास काफी broken down information in the sense that we know कि अच्छा इस date को इस territory के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, इस SKU में एक specific channel में कितनी sales है, right? So that's very granular data in that sense. तो आपके पास हर डेट का आ रहा है कि एक टेरिटरी के अंदर एक SKU की एक चैनल, एक स्पेसिफिक चैनल पे कितनी सेल्स. ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर आप फैसलाबाद की टेरिटरी में देखें, इसी एक डेट के ऊपर आपके पास बहुत सारी ये वैल्यूज आ रही है. ठीक है? you've got around 24 वैल्यूज. तो इस तरह हर जो टेरिटरी है, हर टेरिटरी की आपके पास 24 वैल्यूज आ रही होंगी, और फिर उसके अंदर आपके पास जो है ये 4 SKUs का डेटा आ रहा होगा. ठीक है? और हर SKU जो है उसके भी 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है. Why? Because हर SKU की आपकी 6 डिफरेंट चैनल्स पे सेल्स हो रही है, राइट? तो फॉर एग्जांपल इस 1500 ml बॉटल जो है we're selling this to these 6 चैनल्स, और हर चैनल की फिर आपके पास वो आगे यूनिट सेल्स आ रही हैं कि आप उनको कितना सेल कर रहे हो.
All right. So remember, we're talking about unit sales here. This is not in terms of any currency. It's not a dollar amount. It's just the number of items that you're selling. So in this case, for example, this is the number of 1500 ml के जो pets होते हैं. So you have, 6 bottles का एक pet होता है. Generally जो 1.5 liters वाला होता है. So yeah. So this is basically कि आप 905 जो है उस तरह के pet sell कर रहे हैं. All right. So this is the information that we have. Now let's see, just using this data that we have here, what different kinds of analysis that we can do. So we looked at some of those last time. So for example, if I were to show you some of these tables, हमने देखा था कि, for example, यहाँ पे across the 3 years हमारा sales का trend कैसा है? We looked at this. For example, quarter one से लेकर quarter 4 तक monthly जो है तीनों सालों में क्या variation है. So you can look at, for example, 2010 में ये सबसे नीचे वाली blue वाली line है, उसके बाद red में आपके पास ये 2011 की line है दरमियान में, and then 2012 में it looks like there was a major difference, major increase in the number of units that they were selling. So यहाँ पे देखें इसका distance जो है बाकी दोनों से as compared काफी ज्यादा है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों सालों का कंपैरिजन हमने किया था. Then we looked at something else as well. So this is something that we did using weekly sales data. Weekly sales किस तरह से vary कर रही हैं. So some of these things we're going to repeat today as well, ताकि आपको एक दफा उसका थोड़ा सा overview दोबारा से मिल जाए. All right, so let me go back to this. So this is what we're looking at. So जो date variable होता है ना, अगर आप for example if you were to go to any retailer, जो आप scanner से आप देख रहे होते हैं, कोई भी चीज scan करते हैं when you are basically checking out, तो काउंटर पे क्या करते हैं, हर प्रोडक्ट को स्कैन कर रहे होते हैं. जब भी वो स्कैन करते हैं ना, कुछ उसके साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रही होती है. सो फॉर एग्जांपल द इंस्टेंट दैट प्रोडक्ट इज स्कैन्ड, आपका एक टाइम स्टैम्प भी रिकॉर्ड हो रही होती है. उसको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होती है कि अच्छा इस सेकंड के ऊपर ये सेल हुई है, राइट. इनफैक्ट सेकंड से ज्यादा भी आई गेस उसका वो होता है जो एक्यूरेसी लेवल, इट कुड बी समथिंग लाइक milliseconds at least, if not microseconds. So milliseconds तक at least आपको information आ रही होती है. So वो time step में बहुत सारी information है. You have एक ही field के अंदर ना, एक ही variable के अंदर it's a lot of things combined. So क्या होता है उसके अंदर आपके पास year भी आ रहा होता है, month भी आ रहा होता है, date भी आ रही होती है. Then you have hours, minutes, seconds, and maybe even a smaller unit of seconds. ठीक है, तो वो सारी information आपके पास वो आ रही होती है. Now, let's say आपने उसी variable को, for example, आपने multiple तरह से use करना है. एक variable को आप जो है अब different तरह से group कर सकते हैं basically. ठीक है, so time series data के अंदर बहुत सारे different इस तरह से ना analysis जो है possible होते हैं, because आप उसको year wise देख सकते हैं, उसको आप quarter wise देख सकते हैं, आप उसको month wise देख सकते हैं, आप उसको day wise देख सकते हैं. So a lot of this is possible, right? So that's what we're going to try and see how we can do, how we can achieve that using this data. Okay. Okay. So वही जो मैंने आपको कुछ charts दिखाए हैं अभी. Let's try and see if we can actually try and make one of these charts. Okay. So I'm going to go back to this table here. So how do I make a pivot table? I just select this whole data. You see, you've got around 184,000 rows almost, like more than that. So pivot tables, pivot charts, these are very useful tools to analyze such huge amounts of data in relatively easier to understand tables, और आपको बहुत अच्छी insights भी मिलती हैं. हमने ये table बना लिया, ठीक है. Now what we want to do is we want to firstly do a cross tabulation of so okay, where was that? Okay, so first of all we need to place case unit sales in the values field. because हम unit sales की बात करनी, values की हमारे पास एक ही field है. यहाँ पे इसके अंदर हम unit sales के ऊपर ही analysis कर रहे हैं, ठीक है. So सबसे पहले by default आपको पता है कि
यहाँ पे sum of कोई भी जो भी आपका values variable होता है उसको वो रख लेते हैं. But now we want to see how we want to break these sales down. अब किस तरह का breakup देखना है आप इन sales का, ठीक है? So what we want to do next is we want to draw a chart that looks something like this. ठीक है, अब इस chart के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको date variable चाहिए होगा, of course, because आपको date wise आप trend देखना चाह रहे हैं इस तरह से कि उसका क्या trend बनता है. Now what we can do for that is we can use the date variable in the rows here, और by default यहाँ पे अभी क्या show हो रहा है? ये month show हो रहा है. This is actually because of some grouping that we have done earlier. So what I can do is I can just ignore that for now. इसको मैं दोबारा से ungroup करता हूँ ताकि वो base case में आ जाए. Yes. So this is what the data would originally look like. ठीक है, अभी मैंने date field यहाँ पे डाली है. आप देखें आपके original data के अंदर ना इस तरह से daily data था. अब originally क्या था? हर date के ऊपर देखें आपके पास बहुत सारी values आ रही हैं. हर date के ऊपर you're getting around, if I were to count these, for every date you're getting where's that? Yeah, 168 values. यहाँ पे आप देखें 168 आपके पास records आ रहे हैं. 168 rows में आपका data है एक date के लिए, क्योंकि वो आगे उसके further divisions है ना कि अच्छा वो किस territory में है, कौन सा SKU है, कौन सा channel है, फिर उसकी sales है. अब जब मैंने इसका pivot table बनाया इस तरह से, तो मेरे पास क्या आ रहा है? I'm basically getting only one value for a specific date. इसका क्या मतलब है? उसने उस जो 168 rows आ रही थी ना, उसने उस सबको combine कर दिया basically. ठीक है, तो अब क्योंकि और कोई breakup नहीं है हमारे पास यहाँ पे, हम इसको territory wise, SKU wise, channel wise किसी भी तरह break नहीं कर रहे हैं. All we have here is कि हर date पे total unit sales जो है वो कितनी थी. अब उसमें unit sales भी of course different होंगे. कुछ जो है 1.5 ml bottles के 1.5 liters bottle के पेट्स होंगे, कुछ जो है 250 ml bottles होंगी. So वो भी different तरह की products हैं यहाँ पे. ठीक है, you can argue whether that makes sense or not, but right now what we're trying to see is कि अच्छा ये total number of items जो हैं यहाँ पे कितनी होंगी. अच्छा, now what we want to do is we want to see कि इसका over the year and over the 3 years. So over the year एक तो trend क्या रहा जनवरी से लेकर दिसंबर तक, बिकॉज अक्सर होता है कि आपकी ना कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, उसके अंदर सीजनैलिटी का एक कंपोनेंट होता है. फॉर एग्जांपल सीजन वाइज आपकी सेल्स वेरी कर सकती हैं. सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस दैट्स अ बेवरेजेस कंपनी, राइट? सो दे आर सेलिंग products similar to Coke or Pepsi. What do you think their seasonality is going to be like? So anyone would like to respond to that? उनकी seasonality, for example, किन months में आप expect करेंगे कि उनकी sales ज़्यादा होगी, किन months में आप expect करेंगे उनकी sales कम होगी? So any ideas about that? Anyone would like to respond to that? Yaver? I think it depends upon the season. For example, if it's Coca-Cola, then maybe summers. In summers, the sale would increase. Yes. So it's a beverages company. For example, if we're talking about Coke, तो Coke की आप क्या expect करेंगे? Summers के अंदर इसकी sales जो हैं वो relatively ज़्यादा होंगी, ठीक है? Because गर्मी होती है, तो the sales are likely to spike. And let's draw that. So let's actually try and plot something like that and see whether that's really true or not. So this is actual data. Of course, the numbers are a bit fudged, but let's see how it looks like. So हमें करना क्या है? हमारे पास daily data है, ठीक है? Daily data को हम क्या करना चाह रहे हैं? हमने month wise trend देखना है, ठीक है? Month wise इसको हम करना चाह रहे हैं. अब इसके दो चीजें हैं. हम एक तो क्वार्टर में भी देखना चाह रहे हैं, अच्छा क्वार्टरली सेल्स किस तरह से वेरी करें. हर क्वार्टर के अंदर हम मंथ का भी देखना चाह रहे हैं कि उसके अंदर मंथ्स का ब्रेकडाउन क्या है. डेट वेरिएबल में ना बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेल क्या करता है? इट्स गोइंग टू शो यू सम possible groupings like this.
तो आपको देखें इस तरह के ग्रुप्स में ना आपको दिखा देगा कि आप डिवाइड कर सकते हैं डेटा को. फॉर एग्जांपल ये सारी अवेलेबल ऑप्शंस हैं, years, quarters, months, days, hours, minutes, so depending on how much accuracy you have in your data. So यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ डेली डेटा आपका लोएस्ट यूनिट है, तब इसको क्या कर सकते हैं, डे में कर सकते हैं, मंथ कर सकते हैं, क्वार्टर कर सकते हैं और ईयर कर सकते हैं. ये 4 के अंदर आप ग्रुप कर सकते हैं. What we are interested in here is कि हमारे पास क्वार्टर्स भी आ जाएं और मंथ्स भी आ जाएं. ठीक है, सो डेली डेटा को हम एक्चुअली ग्रुप करना चाहते हैं कि क्वार्टर्स और मंथ्स के अंदर वो हमारे पास ये सेल्स शो हो जाएं इंस्टेड ऑफ डेली सेल्स. तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या किया, लेट मी रिपीट. आई राइट क्लिक हियर, आई वेंट टू ग्रुप करके आई एम बेसिकली ग्रुपिंग इट बाय months and quarters. So I click OK and I have this nice looking summary here कि अच्छा Q1, Q2, Q3, Q4 इनके अंदर sales किस तरह से vary करती हैं. Now there's one thing here that we've not taken into consideration and that is कि हमारे पास 3 different years है, right? So ये तो इसने for example January की बात हो रही है. So this is the total of January 2010 and January 2011 and January 2012. ये तीनों का एक तरह से sum उसने बता दिया. हमें year wise भी break down करना है. ठीक है, but first of all let's see how its graph is going to look like. अच्छा, जब भी इस तरह का time series data होता है ना आपके पास, you generally prefer line charts like this. ठीक है, उसमें क्योंकि trend की बात होती है ना जब भी, तो आप उसमें line charts are going to make more sense. कॉलम चार्ट में उस तरह से ट्रेंड इतना क्लियर नहीं होता. सो आप एक तो उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रखते हैं मोस्टली टाइम वेरिएबल्स को. जनरली अगर आप सिर्फ टाइम को किसी और वेरिएबल के साथ कंपेयर करें तो आप टाइम को जनरली उस पर रखते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, और कुछ और वेरिएबल्स जिनको आप आपस में कंपेयर करना हो उसको आप डिफरेंट कलर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डिफरेंट कलर्स में रिप्रेजेंट करने के लिए यू एक्चुअली इनपुट दैट इनटू कॉलम्स हियर. ओके, so हमने ये तो कर दिया कि ये हमारे पास शो हो गया, ये सेल्स का ट्रेंड आ गया एक तरह से ओवर द मंथ्स. ठीक है, ओवर द 12 months ऑफ अ ईयर. अब क्योंकि इसमें सारे सालों का इकट्ठा आ रहा है, व्हाट वी वांट इज कि हम तीनों सालों को आपस में कंपेयर करना चाहते हैं. ठीक है, नाउ फॉर कंपैरिजन अगर आपने किसी चीज को आपस में कंपेयर करना हो ना, यू जनरली पुट देम इनटू कॉलम्स हियर. ठीक है, जो क्योंकि कॉलम्स में आप पुट करते हैं यहाँ पे वो डिफरेंट कलर्स में शो हो जाते हैं. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक वेरिएबल है हमारे पास, इसको उठा के हम कॉलम में डाल देते हैं. सो नाउ इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. तो हर डेट हर ईयर का उसने एक तरह से आपको ब्रेकअप शो कर दिया. ठीक है, सो on the x-axis here we've got Q1, Q2, Q3, Q4. इसके अंदर monthly breakdown है, और y-axis के ऊपर you've got the number of units that we are selling. अब ये numbers की formatting इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे right click करके number format पे जाते हैं, फिर हम नंबर पे जाते हैं और इसको 0 कर देते हैं, और लेकिन 1000 separator makes it more readable generally. ठीक है, so now it looks better. So these are your total sales over the 3 years, और उनका breakdown कैसे है, उनका आपस में comparison कैसे. ठीक है, so this is what I showed you earlier as well. This is how we made it last time. उसका आप डिजाइनिंग अच्छी कर सकते हैं, वो मैंने हमसे सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, how we can add certain things to this chart. For example, आप यहाँ पे डिजाइन में जाके, डिजाइन टैब में जाके what you can do is आपके पास लेफ्ट साइड पे, अच्छा पहले तो आप ये डिफरेंट डिजाइन में चूज कर सकते हैं. ये देखें डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके पास. आई वुड जनरली रिकमेंड कि आप बैकग्राउंड को वाइट ही रखें, दैट मेक्स इट मोर रीडेबल जनरली. बट फिर उसके अंदर आपके पास ये डिफरेंट तरह की ऑप्शंस होती हैं, राइट. आप लेबल्स डाल सकते हैं, लेबल्स हटा सकते हैं, और आप इस तरह की पॉइंट्स की शेप चेंज कर सकते हैं. You can do all of these things, but then you can also add certain chart elements here from the left, from the top left there. आप डेटा लेबल्स ऐड करना चाहें आप वो कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से आप चार्ट का टाइटल ऐड करना चाहें ऊपर, आप जो है एक्सेस के टाइटल्स ऐड करना चाहें. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा था, we can add an access title here. We can write unit sales here. ठीक है, and then you've got some other chart elements as well. For example, you've got
लेजेंड की आप पोजीशन देख सकते हैं। लेजेंड इसके ये डिफरेंट कलर्स आपको उसने बताए 2010, 11, 12 क्या मतलब है, उसकी पोजीशन भी आप चेंज कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं इफ यू वांट। यहाँ पे हटाना तो नहीं चाहिए, लेकिन फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू पुट इट ऑन एट द बॉटम दैट्स आल्सो पॉसिबल। ठीक है, आपको सारी डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। यू शुड ट्राई एंड एक्सप्लोर देम एंड सी व्हाट दे लुक लाइक। आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं इफ यू नॉट हैप्पी विद देम। आप डिफरेंट आपके पास कलर ऑप्शंस भी यहाँ पे आ रही होती हैं। कस्टम भी चूज कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल होता है कि आपने सर्टन किसी भी एक बार को क्या सर्टन कलर देना है। ठीक है, यू शुड ट्राई एंड एक्सप्लोर दीज ऑप्शंस। ये तो आप जो है खुद से कर सकते हैं एक्सप्लोर इसको फर्दर। So this is one thing that we discussed last time. The other thing was कि हम यहाँ पे आते हैं, so another grouping. So हमने वहाँ पे देखा we only have when we're trying to group that variable there, तो हम इसको right click करके इसको group करते थे ना, तो यहाँ पे होता क्या था, we only have options for days, months, quarters and years. इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप वीक्स में करना चाहें तो यहाँ पे उसकी ऑप्शन नहीं आ रही है ना, तो उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, वीक्स की ऑप्शन आपको खुद से बनानी पड़ेगी। या उसका अब तरीका देखते हैं। बट बिफोर वी आर एबल टू डू दैट, देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू नो। सबसे पहले एक टेबल तो ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हम एक और टेबल बना लेते हैं लाइक दिस। हम यहाँ पे जाते हैं और टेबल बनाते हैं। इनफैक्ट टेबल बनाने से पहले आपको बताना पड़ेगा वो। तो बेसिकली होता क्या है, इन वन वर्कबुक ना, फॉर एग्जांपल ये वर्कबुक है आपके पास, every pivot table that you make from the same data, इसी डेटा से अगर आप कोई भी और पिवट टेबल बनाएंगे ना, ये बेसिकली ना आपस में बैकग्राउंड पे जब सेव कर रहा होता है ना उस डेटा को, इट्स सेविंग वन सिंगल इंस्टेंस ऑफ दैट डेटा। ठीक है, वो मल्टीपल इंस्टेंसेस नहीं सेव कर रहा होता। अगर आपने एक जो है वो बनाया है कुछ इस तरह का, एक आपके पास ये डेटा स्टोर्ड है पीछे, अगर आपने इसमें ग्रुपिंग कर दिया फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कि आपने डेट को आपने क्वार्टर और मंथ वाइज अगर आपने ग्रुप कर दिया लाइक दिस, तो जो बैकग्राउंड पे वो डेटा को सेव कर रहा है ना, उसने उसकी डेट वेरिएबल की इस तरह से ग्रुपिंग सेव कर ली है वहीं पे। अब जब भी आप कोई नया टेबल बनाएंगे यूजिंग द सेम डेटा, तो वो उसमें ऑलरेडी उसने ये वाली ग्रुपिंग की होगी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लेट मी मेक अनदर टेबल हियर। यहाँ पे मैं टेबल एक और बनाता हूँ उसी डेटा को यूज करके। अब दिस इज अ डिफरेंट टेबल राइट, लेकिन अब यहाँ पे डेट को ऐड करूंगा ना यहाँ इधर लाइक दिस, देखो उसने ऑलरेडी उसको मंथ में कन्वर्ट किया हुआ है, और क्वार्टर्स भी यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहे हैं जो हमारे ओरिजिनल डेटा के अंदर तो नहीं थे। अब इफ आई वर टू चेंज दिस ग्रुपिंग, अगर मैं इसको अनग्रुप करके दोबारा ग्रुप करता हूँ कुछ और किसी और तरह, तो उससे क्या होगा, जो बाकी टेबल्स मैंने पहले भी बनाए हुए थे ना, ये वाला टेबल दिस इज आल्सो गोइंग टू अपडेट। फॉर एग्जांपल लेट मी ट्राई डूइंग दिस हियर। मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप करता हूँ ताकि मैं इसको क्या करूँ, इसको मैं ग्रुप कर दूं किसी और तरह से। लेट्स से मैं अभी के लिए मैं लेट्स से डेज ट्राई करता हूँ, इसको डेज पे रहने देता हूँ जो डिफॉल्ट था, या इस तरह आ गया। अब मैं वापस जाता हूँ दूसरे टेबल के अंदर, वो देखें वो सारा चेंज हो गया। माय टेबल इज आल्सो ऑल मेस्ड अप, इट डजंट मेक सेंस एनीमोर। इतने सारे डेटा पॉइंट्स आ गए हैं बिकॉज डेली डेटा है, सो इट्स लाइक ऑल मेस्ड अप, सो आई कांट रियली अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम इट। तो प्रॉब्लम क्या हुई, हम मेरा जो पिवट टेबल था नया वाला, इट वाज एक्चुअली कनेक्टेड टू द प्रीवियस टेबल। ठीक है, तो अब जो भी ग्रुपिंग इसके अंदर कर रहे हैं वो पीछे वाले सारे टेबल्स को इफेक्ट करती जाएगी। अब ये एक्सेल को इसको करता है फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, क्योंकि जब आप एक ही डेटा इंस्टेंस को यूज कर रहे होते हैं तो ये स्टोरेज स्पेस आपकी थोड़ी सी कम लेता है। ठीक है, तो अदरवाइज अगर आप डेटा को बार बार कॉपी करेंगे तो ऑफ कोर्स सिंस द डेटा इज ह्यूज स्पेसिफिकली इन दिस केस, आपके पास hundreds of thousands of rows हैं, तो of course it's going to take a lot more storage space, और आपके स्पीड प्रोसेसिंग स्पीड भी आपकी स्लो हो सकती है। ठीक है, उस वजह से डिफॉल्ट बिहेवियर एक्सेल का ये है कि वो उसी डेटा को कॉपी करता है, उसी डेटा को यूज कर रहा होता है। ठीक है, उसकी एक नया इंस्टेंस नहीं बनाता। लेकिन यहाँ पे ग्रुपिंग के केस में दैट एक्चुअली कॉजेस अस सम प्रॉब्लम्स। अब इसका वर्क अराउंड क्या है, इसका वर्क अराउंड ये है
जब आप ये नया टेबल बनाएंगे ना, पहले तो मैं कंट्रोल Z कर दूं ताकि इट गोज बैक टू डिफॉल्ट, हमारा पिछला टेबल वापस अपनी हालत में आ जाए, लाइक दिस. बट नाउ इफ आई वर टू यूज द सेम डेटा विद अ डिफरेंट ग्रुपिंग, तो मुझे ना एक और तरह से पिवट टेबल बनाना पड़ेगा. ठीक है, उसका तरीका क्या होगा? Those of you who have not done it before, आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे फाइल टैब में जाएंगे. फाइल टैब में जाके you've got this option, आप यहाँ पे ऑप्शंस में जाएंगे. फाइल में जाके ऑप्शंस में गए हैं. ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? You have to go to this quick access toolbar है या इसमें, सो कस्टमाइज रिबन में जाना है आपने. उसके बाद ठीक है, फाइल, ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन. इसके अंदर जो ऊपर ड्रॉप डाउन है ना, सबसे पहले इस ड्रॉप डाउन में यू कैन सेलेक्ट ऑल कमांड्स. ठीक है, उस ड्रॉप डाउन में यू कैन सेलेक्ट ऑल कमांड्स लाइक दिस. और इसके अंदर आपको एक चीज ढूंढनी है, आप इसका नाम होगा पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट विजार्ड. ठीक है, आप P प्रेस कर दें, आपको शायद वहां पे उसके आसपास कहीं ले जाए. P प्रेस कर दें तो आपके पास वो P वाले सारी ऑप्शन आ जाएंगी. तो आपने देखना है पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट कहाँ पर आ रहा है. ठीक है, सो लेट्स ट्राई एंड गेट टू दैट. दैट्स समवेयर हियर. सो वी नीड दिस थिंग, पिवट चार्ट, पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट विजार्ड. ये आपको चाहिए. तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे राइट साइड पे ना, अब ये देखना है हमने कहाँ पे ऐड करना है. सो आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं. मैंने होम टैब में किया हुआ है. होम के अंदर आप यहाँ पे ऐड कर लें. ठीक है, कहीं पे भी आप ऐड कर सकते हैं. आप वहां पे जाएं तो वो टेबल को यहाँ पे ऐड कर दें और यहाँ पे किसी एक टैब के अंदर वहां पे आ जाएगा. मैंने होम टैब के अंदर ऐड किया हुआ है. आप जो है इसको डेटा में भी कर सकते हैं इफ यू वांट. सो दीज आर द टू रेलेवेंट ऑप्शंस. या डेटा में कर लें या फिर आप होम में कर लें, या इंसर्ट में भी कर सकते हैं. होम में कर लें, इंसर्ट में कर लें, या डेटा में कर लें, कहीं पे भी ऐड कर लें. सो इज एवरीवन डन विद दिस? सो लेट मी नो इफ यू आर डन विद दिस. इसको ऐड कर लिया सबने? ऐड करके फिर ओके कर देना आपने यहाँ पे. ठीक है, ओके. इज एवरीवन डन विद दिस? ये पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट विजार्ड ऐड हो गया आपके पास? शहजाद, शगुफ्ता, शायान, यावर? Yes, sir. ओके. ओके, शायान is also done. यावर? सर मेरा नहीं हो रहा. ओके शगुफ्ता, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था. आई थिंक यू वर देयर इन द क्लास. आपका क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? आपके पास ऑलरेडी एडेड तो नहीं है? सर वो कह रहा है कमांड्स कैन ओनली बी एडेड टू कस्टम ग्रुप्स. To add a custom group, pick the tab where you want the group to appear and then click new group. Okay, so what you can do is you can right click here. किसी भी इसके अंदर ना मेन टैब के अंदर यहाँ पे होम में जाएं, होम पे राइट क्लिक करें, ऐड न्यू ग्रुप. ठीक है, उस न्यू ग्रुप के अंदर आप जाएं फिर और वहां पे ऐड कर दें जिस जगह जिस तरह मैंने किया हुआ. Does that make sense? जी सर हो गया. Okay, great. Okay, so अब हम क्या करेंगे? अब हम जो नया पिवट टेबल बनाएंगे ना, we're going to use this pivot table and pivot chart wizard. आपके पास देखें जहां जिस भी टैब में आपने ऐड किया ना,
राइट साइड पे एंड पे आपके शो हो रहा होगा कहीं पे पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट विजार्ड, ये ऊपर एक और कमांड ऐड होगी यहाँ पे. So what I'm going to do now is I'm going to select this data, and instead of creating a pivot table the usual way like I used to do before, हम क्या करेंगे, हम भी pivot table और pivot chart wizard पे क्लिक करें. ठीक है, अब इसके अंदर फर्स्ट में तो आपने यही करना है, एक्सेल से ही आपने डेटा उठाना है और pivot table यूज करना है, तो कीप इट ऑन डिफॉल्ट. नेक्स्ट कर दें. नेक्स्ट में आपसे डेटा की रेंज पूछेगा, वो आपने ऑलरेडी क्योंकि सेलेक्ट की होगी, वो उठा लेगा वहां से. यू क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ सी, योर न्यू रिपोर्ट विल यूज लेस मेमोरी if you base it on your existing report. तो बेसिकली वही बात करें कि अगर आप के पास जो ओरिजिनली हमने बाकी टेबल्स बनाए हुए हैं ना, अगर आप उसी के ऊपर बेस करते हैं इस पिवट टेबल को भी, तो ये आपको रेकमेंड करे कि आप जो है ना वही एज अ बेस यूज करें, तो आपकी मेमोरी कम यूज हो. ठीक है. हाउएवर द प्रॉब्लम इज हम ये नहीं करना चाहते क्योंकि हमारी वो ग्रुपिंग जो है इफेक्ट हो रही है. ठीक है. So it says if you click yes you'll save memory and your workbook file will be smaller. That makes sense. लेकिन हमारी ग्रुपिंग में इशू आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, we will click no so that two reports will be separate. हमारी पिछली और ये वाली रिपोर्ट अलग होगी, तो we're going to click no here. ठीक है, हमें सेम डेटा नहीं यूज करना. अब ये आप बस पूछ रहा है कि आपको न्यू वर्कशीट में पिवट टेबल क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग में करना है, तो ये आप फिनिश कर देंगे, आपको न्यू वर्कशीट में एक नया पिवट टेबल मिल जाएगा. नाउ दिस इज अनरिलेटेड टू the earlier pivot table, so that's why you cannot see quarters here. अब डेट भी इसमें ऐड करेंगे तो आपका डिफॉल्ट वही पहले वाला दोबारा से डेट वही आ जाएगा. ठीक है. So this is how you can actually keep those pivot tables separate. Okay. Now अब आपको क्या करना है, लेट्स से आपको हम देखते हैं वीकली में हमें वीकली सेल्स का ट्रेंड लेट्स से चाहिए. And what we want to do is we want to, let's say, daily sales. We want to look at the daily sales data. And yeah. So let's look at the daily sales data. और इसको हम किसी SKU wise हम देखते हैं कि किस तरह से उसको डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. So we start from this. We look at the case unit sales. Sorry, इसको वीकली करना है आपको. तो वीकली करने के लिए इसका क्या तरीका होगा, हमने डिस्कस किया कि डिफॉल्ट इसकी ग्रुपिंग अवेलेबल वीकली वाली जो है वो नहीं होती. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर. राइट क्लिक करके हम इसको ग्रुप करेंगे. ग्रुप में अब क्योंकि डिफॉल्ट हमारे पास बाय वीक ग्रुपिंग नहीं आ रही, हम इसमें डेज सेलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. डेज के अंदर ना आपके पास नीचे ऑप्शन आ रही होती है कि आपको कितने नंबर ऑफ डेज पे ग्रुप करना है. तो आप इसमें कोई भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर. सो यू कैन डू a grouping of 10 days, do a grouping of 5 days, 2 days, anything you want. तो अगर उसमें 7 कर देंगे तो it's going to make this weekly grouping. ठीक है. तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे days select करके I am writing 7 days there. So when I click OK there, ये देखिए मेरे पास वीकली उसने ग्रुपिंग कर दिया लाइक दिस. ठीक है. इसका नंबर फॉर्मेट भी चेंज कर लेते हैं. नंबर फॉर्मेट अगेन नंबर चाहिए और 1000 सेपरेटेड विदाउट एनी डेसिमल प्लेसेस. ठीक है. सो दिस इज हाउ माय वीकली सेल्स लुक लाइक नाउ. ऑलराइट, एंड दिस इज फॉर ऑल SKUs विदाउट एनी sort of basically other groupings. ठीक है. or other division by any variables. तो अब हम क्या करेंगे, we want to look at these sales data for each SKU separately. क्योंकि हमने बात की थी ना पहले कि यूनिट सेल्स जो हैं, अब 250 ml बॉटल्स का जो यूनिट होगा वो डिफरेंट होएगा. जो 1.5 लीटर बॉटल का जो यूनिट होगा that's going to be different. 2.25 लीटर का यूनिट जो है that's different. उन सबकी प्राइसेस डिफरेंट है, उन सबकी क्वांटिटीज डिफरेंट है. ठीक है. तो उनको अलग अलग देखना चाहते हैं हम उनके ट्रेंड्स को.
So उसके लिए हम क्या करते हैं, हम SKU को उठा के let's say यहाँ पे columns में डाल देते हैं. So now what we see is हमारे पास उन सारे different जो SKUs हैं और हर एक की unit sales अलग अलग से इस तरह से show हो रही हैं. All right, does this make sense? इसमें कोई problem तो नहीं है? Can all of you do it? So we've got date in rows, उसको मैंने weekly grouping कर दिया है. You've got SKU in columns, and you've got the total unit sales in values box there. Is everyone done with this? क्या हो गया आप लोगों को? I'm getting no responses today. Okay, great. So इसी data को अगर हम let's say chart भी बनाते हैं, this is how it's going to look like. So remember हम line chart बनाएंगे. So we get something like this. ठीक है? ये आपके पास सारे तीनों सालों का हमारे पास वीकली डेटा का ट्रेंड आ गया, एक तरह से वीकली सेल्स का ट्रेंड आ गया फॉर the different SKUs. Now let's say we want to, for example, zoom in on some specific time period. ठीक है? Let's say मुझे किसी एक ईयर का देखना होता, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम let's say ईयर को उठा के मैंने फिल्टर में डाल दिया, तो अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि okay, I only want one of these years, 2010 का मुझे दिखाएं. So now it looks more manageable, more relatively easier to read basically. Okay, so you can also do this. And you can compare different SKUs की sales यहाँ पे like this. So you see in light blue there, you've got the 1.5 liter bottles का PET. So this has the highest unit sales, and that's pretty understandable as well, because देखिए आप सबसे ज़्यादा जो sales आप you could probably guess it as well, आप सबसे ज़्यादा sales आपको नजर आती हैं होती हुई वही 1.5 liter bottle जो है ये सबसे ज़्यादा common होती है. और उसके बाद फिर आपके दोनों इनफैक्ट हमें मतलब शायद इतना ज़्यादा फर्क ना लगता हो. 250 ml बॉटल जो है वो भी बहुत ज़्यादा सेल होती है, और जो 1.5 liter bottle है ये भी बहुत ज़्यादा होती है. So you can see both of them are up there in terms of their unit sales. And then the other two 2.25 liters and the half liter bottle, they are relatively low in terms of the number of units that are sold. Yeah, और ये आपको ट्रेंड नजर आ रहा है सबका, वो किस तरह से वेरी कर रही हैं उनकी सेल्स ओवर द ईयर. ठीक है? So यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं 2010, 11, 12 जिसका भी आपको देखना हो डेटा. आप उसको क्वार्टर वाइज भी कर सकते हैं, वहाँ पे एक क्वार्टर की ग्रुपिंग आप एक और ऐड कर लें, और आप क्वार्टर वाइज भी इसको जूम इन करके देख सकते हैं. ठीक है? So all of that is possible here. So let me actually show you how that might be done as well. So यहाँ पे अगर मैं डेट को उठा के यहाँ पे फिल्टर में भी डाल दूँ, अच्छा फिल्टर में वैसे नहीं आ रहा. Let me add another grouping here, for example. ग्रुप करते हुए एक मेरे पास डेली की ग्रुपिंग आ गई और एक क्वार्टर की भी मैं ग्रुपिंग कर देता हूँ. अच्छा नहीं, क्वार्टर शायद इसके साथ नहीं हो. ओके, सो यू गॉट दिस yearly grouping. इसमें एक चीज है, सो व्हाट वी कैन डू इज, अभी हम आगे भी देखेंगे जो फिल्टर्स मैंने अप्लाई किए हैं ना 2010, 11, 12,
इसके लिए ना एक बटन सा एक ऐड कर सकते हैं हम, and that makes our switch fairly smooth and more professional as well. In the sense कि आप यहाँ पे जाएंगे एक दफा एनालाइज के अंदर ना पिवट टेबल या पिवट चार्ट को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे एनालाइज में जाएं, तो इधर आपके पास एक ऑप्शन आ रही होगी ऑफ सॉरी एनालाइज, इसके आपके पास ऑप्शन आ रही होगी इंसर्ट स्लाइसर। So, देखिए आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन क्या आ रही है, यूज अ स्लाइसर टू फिल्टर डेटा विजुअली। नाउ slicers make it faster and easier to filter tables, pivot charts. So let's see what that means. आप insert करें slicer, देखें यहाँ पे filter हमने कौन सा apply करना था, year का filter, तब year add कर दें यहाँ पे, ठीक है। Let's अब channel का भी एक add कर देते हैं in case you want to look at a specific channel in more detail, ठीक है। मैंने क्या किया, year और channel को मैंने select कर लिया। तो जिस तरह वो फिल्टर्स ऐड करते हैं ना आप, इट्स वेरी सिमिलर टू दैट, बट दिस एक्चुअली मेक्स इट मच मोर इजी टू फिल्टर योर डेटा। सो इसको मैं राइट साइड पे यहाँ पे थोड़ा सा ले जाता हूँ, लाइक दिस। आई हैव गॉट दिस अदर फिल्टर। आप क्या कर सकते हैं, इसमें से आप कोई भी पे क्लिक करें, 2010 आ रहा है, यहाँ पे 11 पे क्लिक कर दें, यहाँ पे चार्ट और टेबल दोनों अपडेट हो जाएंगे उसी वक्त। और आप जो है इसको सेलेक्ट कर लें, अगर 2012 को, everything gets updated right away, ठीक है, without any delay whatsoever। इसमें से आपको मल्टीपल सेलेक्ट करनी हो तो आप कंट्रोल प्रेस कर लें, कंट्रोल प्रेस करके रखें तो you can select for example 2010 and 11 इकट्ठे at the same time, or you can select अभी by default तो सारे channels हैं, let's say you only want to look at the sales to for example schools and colleges, ठीक है। So what happens in this case? Schools and colleges में आप देखें trend, how is it different? The green line is on top now, so and that's for the 250 ml bottle. Schools, colleges, etc. they have the highest sales for this bottle here, green वाला जो है 250 ml bottle, सबसे छोटी bottle जो होती है, that has the highest sales there. और जो red वाली है, that's the 2.25 liters bottle. तो देखें that's almost zero, there are no sales for that, क्योंकि वो वहाँ पे होती भी नहीं, अवेलेबल भी नहीं होती 2.25 लीटर्स की बॉटल, उसकी सेंस भी नहीं बनती। तो you can see the trend is different here, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कुछ और देखें, for example if I would look at Horeca is hotels, restaurants, caterers. So you see hotels के अंदर, restaurants के अंदर 250 ml बॉटल ही आपको सबसे ज्यादा मिलती है। 1.5 लीटर तो आप जो है रिक्वेस्ट भी करते रहें तो आपको जो है नहीं मिलती। आप पैसे बचाने की कोशिश करें कि अच्छा हमें 1.5 लीटर बॉटल दे दें, वो कहते हैं कि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 250 ml वाली बॉटल ही आपको मिलेगी, वो भी आपको 1.5 लीटर वाली की प्राइस के अंदर। तो you see that has the highest sales there. So green वाली देखें आप ऊपर, सबसे ऊपर जा रही है। उसके बाद फिर 1.5 लीटर्स है तो सही, लेकिन you see the difference in the unit sales. Groceries के अंदर देखें 1.5 liters is the highest and you would expect that as well. आप कुछ भी आप लेने जाते हैं चीजें, अगर आपने ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेनी हो तो आप it's very rare कि आप 250 ml वाली bottles उठा के ला रहे हो। You generally buy 1.5 liter bottles, या फिर sometimes 2.25 liters as well, or 2.25 liters or half liters. So you see the difference. It's clearly visible. आप यहाँ से कोई भी एक दफा select कर लें, you can select multiple channels from here by pressing control like this. So all of that is possible. And the benefit here is all of these filters are visually available to you. आप देख सकते हैं कि अच्छा कौन से filters आपने एक time के ऊपर apply किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे for example year के ऊपर लगाए ना, तब देखें year के ऊपर filter लगाए हुए 2010 and 11, तो 10 और 11 दोनों हमें देखने हैं। तब यहाँ पे नजर भी नहीं आ रहे, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है मल्टीपल आइटम्स। अब हमें नहीं पता मल्टीपल आइटम्स में वो क्या है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाके इस बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और फिर आपको देखना पड़ेगा अच्छा वो मल्टीपल आइटम्स जो है वो कौन कौन सी हैं।
स्लाइसर का क्या फायदा है, एवरीथिंग इज विजिबल हियर, ठीक है, आपको सब कुछ नजर आ रहा है कि अच्छा अभी जो मैं ये देख रहा हूँ ग्राफ और ये टेबल, this corresponds to these years and these channels, so everything is visible there directly. और इसी तरह से आप ये इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली इसी तरह से उठा के, ये टेबल और स्लाइड्स इसी तरह से उठा के आप किसी फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन में भी डाल सकते हैं और इसको इस डेटा से कनेक्ट कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल व्हाट यू कुड डू इज यू कुड ऐड सम स्पेस हियर. मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, इन दोनों को उठा के ना इसको यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह छोटा कर लिया लाइक दिस. देखें ये मेरे पास स्पेस बन गया राइट साइड पे, ठीक है. मैं लेजेंड को भी अगर मैं उठा सकता हूँ यहाँ से तो I can sort of bring it here if I want. You can see how it looks more visually appealing. I'm not very creative, but let's say if I were to do something like this, I'm bringing it here, and then you can keep your slicers there. अब यहाँ पे slicer आपने यहाँ पे डाल दिया एक like this, and then you could have another slicer here. अब आप इसको किसी भी प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं like this. आप ये क्या करेंगे, आप ये पूरे टेबल को उठाएंगे, पूरे इस फिगर को अब जाके पेस्ट कर देंगे पावर पॉइंट के अंदर. वहां पे कोई भी आपने किसी प्रेजेंटेशन के अंदर दिखाना है, you won't necessarily have to open your Excel sheet for this. वो ये उसके साथ लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिकली. You just have to make sure कि आप उसी कंप्यूटर के अंदर आपकी एक्सेल फाइल भी पड़ी हो. आप वहां पे फिर प्रेजेंटेशन के दरमियान में आप क्या कर सकते हैं, आप ये स्लाइसर सेलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे अच्छा आपने ये सेलेक्ट कर लिया, वो चार्ट्स वो चेंज होते रहेंगे, आप उनको दिखा सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये सिचुएशन है, इस चैनल पे ये सेल्स है, इस ईयर के अंदर ये स्पेसिफिक सिचुएशन थी. अगर हमें सारे ईयर्स दिखाने तो यहाँ पे फिल्टर आप क्लियर कर दें तो इट शोज ऑल ईयर्स, देन यू कैन सी ट्रेंड्स फॉर द डिफरेंट चैनल्स हियर. ऑलराइट, डज इट मेक सेंस? आई थिंक इट्स वेरी कूल. डू यू थिंक द सेम? स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा कर दें. व्हाट डज दैट मीन? छोटा कर दें आप, इसका मतलब है जूम इन कर दूं लाइक दिस, और यू मीन द अदर वे अराउंड? ओके. अच्छा आपको स्लाइसर नजर ही नहीं आ रहा था पहले? यस सर, स्लाइसर नजर नहीं आ रहे थे. इसको थोड़ा सा जूम इन कर दें तो फिर स्लाइसर साइड पे नजर आएंगे. अब आपको नजर आ रहे हैं? यस सर. ओके. एनीवे, इज इट क्लियर टू यू जो अभी हमने डिस्कस किया? Or do you have any specific questions? Yes sir, Faizan? it's clear. Okay. Yes sir, it's clear sir. Okay, great. ठीक हो गया. ओके ठीक है, तो हमने स्लाइसेस भी डिस्कस कर लिया, हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं. वी टॉक्ड अबाउट ग्रुपिंग्स. नाउ लेट्स ट्राई समथिंग एल्स. अच्छा, अभी हमने देखा कि हम वैल्यूज को किस तरह से ग्रुप कर सकते हैं, सॉरी डेट को किस तरह से ग्रुप कर सकते हैं. ठीक है, डेट के अलावा आप जो है बाकी टाइप्स ऑफ फील्ड्स को भी ग्रुप कर सकते हैं. ठीक है, तो एक आपके पास वैल्यू फील्ड्स होती हैं जहाँ पे नंबर्स होते हैं, और एक आपके पास टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं. ठीक है, दोनों की आप ग्रुपिंग्स कर सकते हैं. वैल्यू फील्ड्स के लिए आपके पास कुछ डिफरेंट तरह की ऑप्शंस होती हैं, टेक्स्ट फील्ड्स के लिए आपके पास कुछ डिफरेंट तरह की ऑप्शंस होती हैं. लेट्स ट्राई one example for each to understand कि आप वहां पे किस किस तरह की groupings अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, so for this I'm going to go to this Desi Savvy chapli kebab data. So
let's use this. So let's create a pivot table out of this. So मैं इसको select किया, insert pivot table. I have this new pivot table here. Okay. Now what we want to do is we want to arrange vehicle values of Desi Sevi triers into groups of 10 lakhs each. Okay. And we want to, of course, group that. We want to break that up into those people who have tried or tried kebabs or not tried kebabs. ठीक है? आपके पास यहाँ पे data के अंदर देखें. For every person who's surveyed, we are collecting different type of information from that person. So age क्या है उनकी, उनका weight क्या है, उनकी income level क्या है, उनकी job type क्या है, vehicle की value क्या है, ठीक है? So I think it should be in what's the unit for this? 0.5. What is that supposed to mean? Let me have a look. Acha, yeah, it lakhs of rupees. Okay, ठीक है. So 8 lakhs, 20 lakhs, ठीक है, it's something like that. 40 lakhs, and so on. Okay. So this is the value of the vehicle. What we want to do is, we want to create this pivot table. इसको हम देखने ये चाह रहे हैं कि अच्छा जो हमारी जो division है by the number of people who have tried the kebabs or not tried the kebabs. सबसे पहले हम वो division करते हैं और हमें उनको count करना है. So we want to count the number of people. So these are the total number of people. Sorry, these are not the total number. So count करना पड़ेगा. ये person देखें, आप remember आपके data के अंदर ये आपका ID variable है. So every single person who's responded to the survey is assigned one particular ID. So you 1, 2, 3, 4 and so on. आपको number of people count करने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? You have to summarize this by count. So that shows you the total number of people who were surveyed, 856. अगर आपने इनको break up करना है अब by how many of them tried and how many of them did not try, तो ये उनका breakup आ गया columns के अंदर no or yes by no or yes, ठीक है? Now what you want to do is कि अच्छा आप देखना चाहते हैं कि how is it different by different across people who have different types of vehicles? क्या उसका कोई effect होता है kebab try करने पे नहीं या नहीं? We just want to explore that. Is that reasonable? Is that trend there in the data? We want to have a look at that. So मैंने यहाँ पे vehicle values को डाल दिया rows के अंदर. अब इसमें problem क्या हो रहा है? The problem is मेरे पास ये बहुत सारी values आ गई हैं, like 424 different values. Okay, numerical data है ना, तो numerical में तो कोई भी number हो सकता है. अब 0.5 is different from 0.6, 0.8 is 1.8 is different from 1.9. यानी किसी की 190,000 की vehicle है, 190,000 की बाइक है उसके पास, या 180,000 की बाइक है. अब उन सब का different show हो रहा है, लेकिन practically doesn't make a significant difference. किसी के पास जो है वो 10 लाख की गाड़ी है या 10.5 लाख की है. Does that make a lot of difference? It probably doesn't in practical terms. अगर आपने उनके behavior को अगर understand करना है, इतने से difference से तो कोई इतना change नहीं आने वाला, ठीक है? So what you want to look at is to basically group this, ठीक है? So group for example हम यहाँ पे कर लेते हैं. आप कोई भी grouping सोच सकते हैं, ठीक है? So आप let's say आप कहते हैं कि अच्छा 10 लाख तक कोई vehicle जो है उसकी वैल्यू है तो उसको हम एक तरह से देखेंगे. 10 to 20 है तो उसको और तरह देखेंगे. 20 to 30 है उसको और तरह उसको हम अलग से कैटेगराइज कर सकते हैं. So we can categorize it like that, ठीक है? अब उसका तरीका क्या होगा? आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, again you group. अब वैल्यू फील्ड्स को जब इस तरह ग्रुप करेंगे ना, remember डेट के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही थी. It was days, months, quarters, years. But in this case, जब आपके पास एक वैल्यू वेरिएबल है, you're getting different options. अब यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि अच्छा which value we should start from. तो हम start चलें 0 से करते हैं ताकि वो वैल्यू थोड़ी सी सेंस बने ज़्यादा. 0 से स्टार्ट किया और एंड जो है कहाँ पे करते हैं? 140 पे. उनके हाईएस्ट वैल्यू आपकी 132.4 है, ठीक है? हम लेट्स से अगर हमें 10 के इंटरवल्स पे देखते हैं
हम 10 के नहीं 15 के इंटरवल्स पे देखते हैं तो 135 तक कर लेते हैं, ठीक है, और हम इसको करते हैं बाय 15, ठीक है। सो डिफरेंट कैटेगरीज बनानी है हमने 15 lakhs ईच की, 0 से 15 तक एक कैटेगरी है, 15 से 30 तक एक और कैटेगरी है। वी वांट टू ग्रुप इट लाइक दैट, ठीक है। सो मैंने लोएस्ट वैल्यू 0 लिख दी है, हाईएस्ट 135 लिख दी है। 135 इज अ मल्टीपल 15, तो हमारे पास टोटल 9 ग्रुप्स बन जाएंगे आई थिंक। लेट्स क्लिक ऑन ओके एंड सी व्हाट वी गेट। So we're getting 0 to 15, 15 to 30, 30 to 30, 30 to 45, 45 to 60, but after that we've got 90 to 105, 105 to 120, 120 to 135. Okay, so there's a problem there. 60 से लेकर 90 तक हमारे पास ग्रुप आ ही नहीं रहा है. Any idea why it could be like that? वो हमारे पास ग्रुप ही नहीं आ रहा है यहाँ पे 60 से 90 तक. So I ask questions like this just to, you know, ensure कि आप लोग जाग रहे हैं तब तक, और जब रिस्पॉन्स नहीं आता मुझे लग रहा होता है कि अच्छा शायद नहीं जाग रहे. So I still have no response. So why do you think we don't have this group here 60 से लेकर 90 तक? Any ideas? Yes, so if you look at the data, yes, Azad. So the thing is, we 60 से लेकर 90 तक हमारे डेटा के अंदर कोई भी बंदा नहीं है जिसके पास गाड़ी इस रेंज के अंदर है 60 से लेकर 90 तक, ठीक है. So that's why हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रही है वैल्यूज. That's the reason. Overall आप ट्रेंड को देखें, of course you would expect कि 0 से 15 तक we've got the highest number of values, that's about around 400 people. And then of course जैसे जैसे वो प्राइस बढ़ती जाती है 15 से 30, we've got a relatively less number 400 से at least, और फिर मैक्सिमम जो है हमारे पास जो ज्यादातर लोग हैं वो 45 तक की रेंज में. And then the number starts decreasing significantly. 45 to 60 we've got only 26 people, and then there are very few people above that. So you can see कि ट्रेंड में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा इनके ट्राई करने में. सब इसको लेट्स से अगर हम इसको करते हैं परसेंटेज टर्म्स में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स शो रहे हैं, मे बी दे आर मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. इसमें हम परसेंटेज पे कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ रो टोटल. तो ये मुझे बता रहा है कि 0 से 15 वालों के अंदर yes is 50%, and then it's increasing after that. So the number of people who has responded yes, the percentage of people who responded yes was the least among those people who have vehicles with value between 0 to 15, right? So that's an interesting thing that we found out from here. All right, so ये हमने ग्रुपिंग कर दी इस तरह से. जो व्हीकल वैल्यूज थी उनको हमने इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ग्रुप कर दिया. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके ग्रेट. सो वैल्यू फील्ड्स को हम हमारे पास ये डिफरेंट तरह की ग्रुपिंग ऑप्शंस होती हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ऑल राइट, नाउ लेट्स लुक एट समथिंग एल्स. टेक्स्ट बेस्ड फील्ड्स को अब देखते हैं, ठीक है. सो वैल्यू फील्ड्स के अंदर हमने देखा कि हमारे पास किस तरह की ऑप्शंस होती हैं अवेलेबल. टेक्स्ट फील्ड्स में देयर आर नो डिफॉल्ट ऑप्शंस एज सच, ठीक है. उसमें आप जो है खुद से कुछ किसी भी तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं however you want. So let me try this.
let me start off. Yeah, we want to make something like this of this form. हमारे पास एक data था, remember, that was the ElectMart data. Do you want to use that or the other one? Let's see, यहाँ पे ये KKBL वाला data. Yes, okay. So KKBL data के ऊपर what you want to do is, हमारे पास remember ये एक इस तरह का data था already जो, let me see if I have it here in this sheet. अच्छा नहीं, वो दूसरे शीट के अंदर था, पिछली वाले इसके अंदर. Okay, let me make a new pivot table. So मैं यहाँ पे एक नया pivot table बनाता हूँ like this. Insert a new pivot table. And I'm looking at how the sales vary across the different territories that I have. Like this. Okay? So this is how the sales vary across territories. अच्छा यहाँ पे by default एक count आ रहा है अभी. Sorry, मैंने गलत वाली डाल दिया उसके अंदर. I should have had yeah, unit sales there. Okay, इसका मैं format सही कर लेता हूँ. Number format, number 0 decimal places क्योंकि unit है, unit decimal में तो हो नहीं सकता. And 1000 separator. Now it looks better. These are basically territories, remember. So let's change कर देता हूँ, make it look better. So this is what I have right now. Okay. Now let's say I want to divide this into different regions. ठीक है. Different regions के अंदर divide करना है मुझे. For example, I could say कि जो लाहौर है या फैसलाबाद है या गुजरांवाला है, this is one region जो north के अंदर सारे आ रहे हैं. ठीक है. मुल्तान भी you can say probably आप उसको कहाँ पे रखेंगे. फैसलाबाद गुजरांवाला अच्छा उसको उसमें रखा हुआ है, मुल्तान को अलग रखा हुआ है और कराची को अलग रखा हुआ है. Let's see what kind of grouping you want. Okay, so let's define our own grouping then. So let's say हम रखते हैं फैसलाबाद, गुजरांवाला और लाहौर और मुल्तान को. In fact, let's say हम इसको इसी तरह कर लेते हैं कि province wise कर लेते हैं. ठीक है. तो province wise करते हैं. So we've got these 4 cities that are from Punjab. Okay, I'll have to sorry, I'll have to zoom in again. Sorry about that. So let's do it by province. So we've got Faisalabad, Gujranwala, we've got Lahore and Multan. So these are all from Punjab, right? So what we can do is we can right click there and we can group it. ठीक है. हमने क्या किया, मैंने चारों उनको select किया by pressing control. Control को मैं press करके रखूंगा तो उस पे क्या होएगा, I can select multiple values from there and then I can right click करके I can group like this. ठीक है. जब उसको group करूंगा ना, मैं देखें उसने ऊपर create कर दिया एक नया group and I can change its name however I want. ठीक है. So for example, इसको मैं edit कर लेता हूँ यहाँ से. I can press F2 for example. We actually missed one city from there, but we'll do that. We've missed Rahim Yar Khan, that's also in Punjab. So I'll also show how we can add another city there if we want. So इसको मैंने F2 press करके ना I can edit it. इसको मैं पंजाब लिख देता हूँ. ठीक है. So now I've got a group like this. Sir, Yes. मेरा group नहीं हो रहा. क्या problem आ रहा है? सर मैं से group कर रही हूँ तो वो कह रहे हैं इसको group नहीं कर सकते. It shouldn't be like that. आप इनको आपने सिर्फ इन values को select करना है. Right click करके group करते हैं. मुझे error बताते हैं क्या आ रहा है?
एरर क्या आ रहा है आपके पास? Cannot group the selection. आप कुछ गलत कर रही होंगी फिर. यू हैव टू फॉलो एग्जैक्टली लाइक दिस. आपने फैसलाबाद को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके ये एक और सेलेक्ट किया, और आपने चारों सिटीज सेलेक्ट कर लिया. बस उसके अलावा कुछ और नहीं सेलेक्ट करना. एंड यू राइट क्लिक राइट उसी के ऊपर एंड ग्रुप देम. maybe try again, it might work. Otherwise towards the end you can show me your screen और हम उसको कर सकते हैं debug के क्या issues आ रहे हैं. Is everyone else able to do that? बाकी तो किसी को issues नहीं आ रहे? Okay, so if anybody is having any specific issues, हम towards the end उसको और discuss कर सकते हैं. You can share your screen और हम उसको debug कर लेंगे. ठीक है? अच्छा, for now मैंने यहाँ पे इसको select कर लिया. This is पंजाब. अब देखें बाकी भी उसने ना एक उसने नया वेरिएबल क्रिएट कर दिया एक तरह से आपके लिए. देखिए रोज में मेरे पास पहले सिर्फ टेरिटरी था. Now I've got another variable there that's named territory 2. So अभी territory 2 जो है ना ये आपका वो जो नया वेरिएबल आपने क्रिएट किया है उसका एक तरह से नाम बन गया. ठीक है. अब देखिए कराची भी दो दफा आ रहा है क्योंकि बड़े वाले ग्रुप के अंदर भी उसका नाम कराची है और जो अंदर उसके सब ग्रुप है उसका नाम भी कराची. तो उसको मैं चेंज कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल आई कैन से दिस इज द कैपिटल सिटी. आई कैन से दिस इज सिंध. इसका नंबर सिर्फ कराची आ रहा है. I've got Rahim Yar Khan left and this had to be in Punjab लेकिन मैं भूल गया उसको put करना like that. So अब मैं क्या करूँ? Since I've missed that, what I'll have to do is I can select this again. So मुझे क्या करना होगा? I can select these 4 cities जो मेरे पास already उस group के अंदर थे पहले, and I can also select this Rahim Yar Khan again. उन चारों को select किया और इसको select किया, right click, group again. उसने दोबारा से उसको ग्रुप कर दिया उस तरह से. ठीक है. इसमें एक मसला होगा आपको दोबारा से उस ग्रुप का नाम चेंज करना पड़ेगा. नाम उसको दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा. अब नाम उसका अपडेट कर दिया दोबारा से. गॉट पंजाब अगेन. ठीक है. सो मैंने इसको ग्रुप कर लिया बाय प्रोविंस. सो आपको कोई भी आपके पास टेक्स्ट फील्ड हो आप उसको इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं. सो अगर आपके पास यहाँ पे सिंध में भी फॉर एग्जांपल मल्टीपल सिटीज होते हैं, आप उनके भी क्या करते हैं, आप उनको जाके सेलेक्ट करते हैं एक एक करके और उनका एक ग्रुप बना देते हैं. ठीक है. सो यू कैन डू इट लाइक दिस. नाउ इफ यू हैड टू फॉर एग्जांपल यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी सब टोटल टेरिटरी 2. ये सब टोटल्स भी ऐड हो सकते हैं कि अच्छा पंजाब का टोटल ये आ रहा है, ये कैपिटल सिटी का आ रहा है और जो है ये मेरे पास सिंध का आ रहा है टोटल. ऑलराइट. तो मेरे पास सबके डिफरेंट वैल्यूज भी आ गई इस तरह से. एंड आई कैन आल्सो कोलैप्स ऑल ऑफ दिस. तो मैं राइट क्लिक करके मैं कोलैप्स एंटायर फील्ड करता हूँ. मेरे पास सिर्फ वो देखें वो हायर लेवल डेटा आ गया एक तरह से. अच्छा पंजाब में ये सेल्स थी, कैपिटल में ये थी, सिंध में ये थी. नाउ if I want to dig a bit deeper, I can click on this plus sign. I can expand that part only and I can look at the details inside. और I can collapse it again और मैं दोबारा से इसको करके सिंध को देख सकता हूँ. अच्छा यहाँ पे क्या क्या मेरे पास आ रही. और I can keep it like this. ठीक है. ग्रुपिंग में आप इस तरह से हायर लेवल एक तरह से व्यू आपको मिल जाता है. All right. Any issues here? Is this clear to everyone? Okay, great. All right. So now what we want to do is, this is pretty much
end of what you want to do, combination charts. So this is also something very useful. आपने अक्सर देखा होगा एक ही चार्ट, एक ही ग्राफ के ऊपर या एक ही फिगर के ऊपर you have multiple charts. For example, एक जो है वो कॉलम चार्ट बना होगा या बार चार्ट बना होगा और दूसरा लाइन चार्ट बना होगा, है ना? So you must have seen something like that. So अक्सर तो होता है कि आप बिल्कुल डिफरेंट वेरिएबल्स शो कर रहे हो दोनों axes के ऊपर. So that's also possible. Let me see if I can actually make up an example like that. So what could we do? Let me have a look. So यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इनकम लेवल कर सकते हैं और व्हीकल वैल्यू. ओके, टाइम नहीं है वहाँ पे. अच्छा, इधर क्या कर सकते हैं, सब यूनिट सेल्स हैं और एवरेज. एवरेज में भी वही आएगा, इसमें भी आएगा. Lookmart क्या है, got some daily data about the total spending and items ordered. The total number of items ordered, yes, that would make sense. Okay, so let's try this Elecmart data. ठीक है, इसको मैंने select किया, पूरा Elecmart data को मैंने select किया. Insert pivot table. New worksheet. डेट को मैंने रोज में डाल दिया. सो डेली मैंने ट्रेंड देखना है. I've got two main variables there. I've got, for example, the total spending in values, and I've got, let's say, the number of items ordered. So total sales in terms of dollars and the total unit sales. ठीक है, दो different चीजें. एक currency है, so I can change the number format to make it clearer. So ये आपके पास dollar sales है और ये आपके पास number of units है. ठीक है, and it got the daily trend for both of them. Now let's say you want to plot these two variables on a single chart, and you want to see कि अच्छा दोनों का trend क्या है. You don't want to make multiple charts for this. You only want one single figure जिसके ऊपर आपको इन दोनों का trend मिल जाए. Let's see if this is possible. So मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, I can for example create a new pivot table. No, not new pivot table. I'll just need to create a new chart here, pivot chart. यहाँ पे मेरे पास एक तो ऑप्शन आ रही है लाइन की. अब लाइन चार्ट में इसको बनाता हूँ तो I get something like this. So I get two charts. One is for the sum of total spending. That makes sense. Okay, this is the trend. That looks fairly random, as in, लेकिन over the year आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा upward trend तो है, थोड़ा सा increase कर रहा है. So over the 3 months that we have here, थोड़ा सा upward trend आ रहा है, लेकिन values वैसे जो है वो काफी ज़्यादा variation है ऊपर नीचे. Okay, all right. So that's fair. That's understandable. लेकिन जो items ordered का जो trend आ रहा है, total number of items ordered, you see that's hardly visible. वो बिल्कुल ही नीचे एक तरह से straight line नहीं आ रही है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि अच्छा उसका trend कोई है भी या नहीं है, क्या सीन है. So any ideas what the problem here is? Anyone? क्या इशू आ रहा है, क्यों ये इतना नीचे चार्ट आ रहा है जिसका कोई ट्रेंड भी नहीं नजर आ रहा हमें. हालांकि ट्रेंड तो यहाँ पे कोई ना कोई तो होगा ना, आइटम्स का कुछ वैल्यूज क्लियर ही नहीं है, बिल्कुल ही स्ट्रेट आ रही है लाइन. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? एनी आइडियाज? एनीवन?
Okay, so basically the problem is ये जो total spending है ना, इसके यूनिट्स देखें कि काफी ज्यादा है, इसकी रेंज देखें, you're going until like $1,400, $1,600, $1,650, लेकिन जो आइटम्स ऑर्डर है ये बहुत थोड़ी है। सो ये 28 जा रही है यहाँ पे मैक्सिमम नंबर इसका काफी छोटा आएगा, जो भी नीचे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑर्डर। सो 30 तक जा रही है, 39 मैंने एक नंबर देखा है, लेकिन कोई भी जो है लेट्स से 50 से ऊपर कोई एक भी वैल्यू नहीं है यहाँ पे, राइट? सो अब वो क्योंकि स्केल इतना बड़ा है यहाँ पे 0 से लेकर 1800 तक जा रहा है, वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे उस स्केल के ऊपर तो बिल्कुल ये आपके बॉटम के ऊपर एक लाइन ही शो होगी, क्योंकि इतना बड़ा स्केल है कि आपकी ये इससे ऊपर जानी ही नहीं है लाइन, ठीक है? तो इसलिए आपको कोई प्रॉपर ट्रेंड भी वहां पे आज सच नहीं नजर आ रहा। इस तरह के केसेस में आप अक्सर क्या करते हैं, यू मेक वन ग्राफ ऑन वन एक्सिस एंड द अदर ग्राफ ऑन द अदर एक्सिस। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा इस तरह के ग्राफ्स होते हैं कि एक आपके पास दोनों साइड पे एक्सिस होते हैं और एक जो है ग्राफ उसके ऊपर या एक लाइन जो है वो एक साइड वाले एक्सिस को एक्सिस से मिल रही होते हैं पे रीड करते हैं आप, और दूसरी लाइन जो है आप दूसरे एक्सिस पे करते हैं। तो एक्सेल के अंदर ये बनाने के लिए आपके पास यहाँ पे चार्ट्स के अंदर एक ऑप्शन होती है कॉम्बो चार्ट। सो सम ऑफ यू डिपेंडिंग ऑन द वर्जन ऑफ एक्सेल यू हैव, some of you will see it as a combo chart, for others it might be written as combination chart, ठीक है? ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अब इसमें देखें, क्योंकि मैंने ये बस दो वेरिएबल्स थे, वन इज टोटल स्पेंडिंग एंड द अदर इज आइटम्स ऑर्डर्ड। I'm sorry, it's very small, the text that I have here. I hope it's visible, even though barely. But I don't think I can increase the size of this text unless I use a magnifier, or I can try and use that if that makes it easier. So magnifier use kar leta. Yeah. So now it's better, I think. So I've got this dialog box. इसके अंदर मेरे पास ये options आ रही हैं, ठीक है? Total spending and items ordered. Now chart type आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन, आप clustered, आप column chart कर सकते हैं, आप line chart कर सकते हैं, आप bar chart कर सकते हैं. These are the more common options. तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं दोनों को, मुझे line chart ही बनाने, क्योंकि मुझे time wise trend देखना है ना, मैं दोनों को line chart ही रखता हूँ। अब this is what I was getting initially, जो मुझे यहाँ पे एक तरह से प्रीव्यू के अंदर नजर भी आ रहा है थोड़ा सा, है ना, कि वो एक ट्रेंड जो है बिल्कुल ऊपर है और रेड लाइन जो है that's almost at the bottom for the whole duration. अब यहाँ पे देखें आपके पास एक चेक बॉक्सेस आ रहे हैं सेकेंडरी एक्सेस के, ठीक है? By default क्या होता है, both of them are plotted on the primary axis and that's the axis on the left here, ठीक है? आप क्या करें, आप इनमें से एक को आप सेकेंडरी एक्सेस पे कर दें। फॉर एग्जांपल मैं आइटम्स ऑर्डर को कर देता हूँ, इसको मैं चेक कर देता हूँ सेकेंडरी एक्सेस को, ठीक है? अब इस पे क्या होगा, मुझे दो एक्सेस मिल जाएंगे अपने ग्राफ के ऊपर, एंड दे लुक लाइक दिस। लेफ्ट साइड पे आपके पास डॉलर वाला आ रहा है, और अगर आपको ब्लू वाली लाइन को रीड करना है, सो आई कैन फॉर एग्जांपल increase the size here a bit, so maybe they look a bit more differentiated. आपको ब्लू लाइन से आपको नजर आ रहा है कि आइटम्स ऑर्डर जो है उनका ट्रेंड क्या, तो उनको आप कहां से पढ़ सकते हैं, राइट साइड वाले एक्सिस से। देखिए वो मैक्सिमम 45 तक जा रहे हैं। So now you can see the trend for both of them, and you can see they almost follow each other मतलब very closely. जो आपका टोटल स्पेंडिंग का ट्रेंड है वही आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स का ट्रेंड है, which is understandable, आपके पास काफी सिमिलर ही होना चाहिए। पहले शुरू में बहुत ज्यादा क्लोजली फॉलो कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो है नंबर ऑफ आइटम्स ऑर्डर थोड़ी सी ऊपर है और टोटल स्पेंडिंग थोड़ी सी नीचे है। that sort of means एक तरह से कि
जो average value है of products that has increased in the latter half here. So that's one way to do this, जहाँ पे आपने दोनों different axes पे आपने इसको show कर दिया in graphs. Does that make sense? इस पे कोई questions? इसी तरह से let's say यहाँ पे date की बजाय मैं अगर कुछ और use करता हूँ, so I'll just copy this chart ताकि ये भी save हो जाए. Let me create another copy of this chart. Let's say date की बजाय if I was looking at something else, मैं देखना चाहता time of the day, because different options हैं उसकी, I guess afternoon, evening and morning. तो इसमें भी आपको देखिए different trend पता चल रहा है. इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि you can make one of them a column chart if you want. So for example, मैं analyze में जाता हूँ, pivot chart में दोबारा जाता हूँ और combination chart की बात कर रहे थे. So I can keep one of them as a column chart, a clustered column. Total spending को मैं column chart में कर लेता हूँ और जो items ordered हैं उसको मैं secondary axis पे as a line chart show कर देता हूँ. This is what it will look like in that case. You see, एक आपके पास column chart आ रहा है, वो आपका primary axis पे है, जो आपको बता रहा है different time of the day में, let's say आपकी total spending क्या थी. So afternoon में आपकी सबसे ज़्यादा show हो रही है यहाँ पे, इसको sort भी कर लेते हैं morning, afternoon, evening. So ये आपका trend आ रहा है एक तरह से. morning में आपकी items ordered का total spending का value और similarly afternoon और evening में उनकी values और ये आपकी number of items पे किस तरह से उनका trend है. ठीक है? Does that make sense? अगर आप इसको दोनों को अगर column chart करेंगे ना, that would not make a lot of sense. एक clustered और एक line chart हो सकता है या दोनों line chart हो सकते हैं. दोनों clustered हो जाएंगे तो वो एक दूसरे को overlap कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, एक आपको नजर आएगा, दूसरा नजर नहीं आएगा. So that would not make sense. It has to be either one column chart and one line chart or both of them line charts. तब आप ये combination chart बना सकते हैं. ठीक है? Now it depends on your requirement कि आपको क्या show करना है on both the axes. But generally आप ये तब use करते हैं जब ये दोनों axes जो है ना बहुत different हो. एक value जो है वो उसकी range ही और है. ये देखें 25 या $30,000 तक जा रही है. दूसरी value जो है maximum यहाँ पे 600 तक जा रही है. तो अगर आप एक ही chart के ऊपर दोनों को एक ही एक्सिस के ऊपर दोनों को प्लॉट कर देंगे तो आपको एक तो बिल्कुल ही नजर ही नहीं आएगा. ठीक है? So that's what is important here. So any questions at this point? All right, so if there are no questions, we'll just move to the last thing for today. And that's a very small thing of Spark lines. Let me see if I can actually use one of the earlier pivot tables to show that. Okay. Maybe something like this. So I can actually, yeah, I can actually create another pivot table and that might work. So KKBL के ऊपर, maybe if I want to, for example, make another pivot table. इस पे अच्छा जहाँ मेरे पास values बहुत ज़्यादा हों, let's say इसके अंदर कितनी values हैं? Job type only 3. Okay. Like mart में क्या है? Okay, let's try this on KKBL. So let me make another pivot table. Let's say
it looks something like this. Pivot table, new worksheet. I'm looking at the case unit sales again. What I want to look at is, okay, let's say इसका ट्रेंड क्या आ रहा था यहाँ पे by year and quarter. तो बेसिकली हर साल की मेरे पास चार वैल्यूज आ गई हैं एक तरह से. तो मैं सब टोटल को अगर रिमूव भी कर दूं यहाँ से, so you see what I see here is on in the columns box here I've got year and quarters. ठीक है, मेरे पास इस तरह का डेटा आ गया. Let me actually change the number format. 1000 separators, 0 decimal places. Okay. अभी देखिए कॉलम के अंदर ना मेरे पास शो हो गया. So let me actually show this to you in rows first. Okay, it makes more sense. So this is something that I think we looked at earlier as well. Year wise आपके पास क्वार्टर का आपके पास आ गया. So ये आपका इस तरह से आपकी क्वार्टरली सेल्स वेरी कर रही हैं across 3 years. इसी चीज को मैंने क्या किया है, मैं इसको कॉलम्स के अंदर लेके आऊं because I want to use some cross tabulation here. So मैं करना क्या चाहता हूँ, I want to look at this trend for each territory. So मैं हर टेरिटरी का इस तरह से ट्रेंड देखना चाहता हूँ, like this. ठीक है. Now यहाँ पे तो मे बी आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपने अब इस ट्रेंड को लेट्स से प्लॉट करना होता ना, आपने इस ट्रेंड को प्लॉट करना है ऑन चार्ट, पिवट चार्ट. अच्छा यहाँ पे उस तरह से नहीं आएगा, उल्टा करना पड़ेगा. अच्छा वन वे वाज आप इसको प्लॉट करते हैं इस तरह से चार्ट में, टेरिटरी को मैं वहां पे लेके जाता और ईयर और क्वार्टर्स को यहाँ पे लेकर आता. इसके मैं बना सकता हूँ पिवट चार्ट लाइक दिस. लेकिन मैंने रोज के अंदर क्या किया है, रोज के अंदर आई हैव द डेट वेरिएबल, द ईयर एंड क्वार्टर्स. कॉलम के अंदर आई हैव टेरिटरीज. अगर मैं इसका पिवट चार्ट बनाता ना, लाइन चार्ट लाइक दिस, I could see the trend for all of them इस तरह से एक लाइन चार्ट की फॉर्म में. ठीक है, कि वो क्वार्टरली उन सब का ट्रेंड जो है किस तरह से बन रहा है. Alright, so you can have a look at it like this for each of the territories. But just imagine, अभी मेरे पास कितनी territories हैं? I only have 7 territories, and it already looks like it's almost getting a bit too cluttered. ठीक है. Let's suppose आपके पास ये 15 कैटेगरीज होती, 20 कैटेगरीज होती, 20 टेरिटरीज होती या 15 टेरिटरीज होती. Now plotting all of them on a single chart, you would have like 15 different colors. एक तो clutter तो और बात है, clutter मतलब आपके पास 15 different lines है, 20 different lines है. अब वो हर टेरिटरी के different color में शो हो रही होगी, आपको आप figure out नहीं कर सकेंगे अच्छा कौन सा color जो है कहाँ पे ढूंढूं मैं. Already you can see we've got 2 blues. We've got one darker blue, that's Faisalabad, and one light blue, that's Lahore. मुझे थोड़ा सा carefully देखना पड़ता है. अच्छा, this is Faisalabad, this is Lahore. Just imagine if I have 15 different colors, 20 different colors. अब वो colors ऐसे होंगे कि उनमें आपको differentiate करना भी it's going to get difficult. और clutter जो है वो तो अपनी जगह है. आपके पास 15 lines यहाँ पे show हो रही होंगी, 20 different lines show हो रही होंगी, वो clutter एक अपनी जगह है. अब इसके लिए ना, there's actually something very useful that you can use directly in the tables there. उसके लिए one way to do that is, in fact, let me actually change इसमें comparison भी हो सकेगा. I'll change the format of the data a bit, in the sense के मैं territory को row में रख रहा हूँ और year और quarters को वहां पे लेके जा रहा हूँ. You'll just see के इसके reason क्या है. बंद कर देता हूँ यहाँ से. So this is what the data looks like now. ठीक है, मेरे पास शो हो रहा है for these territories कि वो quarterly sales उनके किस तरह से vary कर रहे हैं.
All right. So for Faisalabad, for example, I can see ये पूरा सारे क्वार्टर्स में किस तरह से आ रहा है. ग्रैंड टोटल को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ. Now there's something very useful here, and that is कि आप इन सब के ना charts बना सकते हैं और उनको अलग-अलग show कर सकते हैं within cells. Let me show you how it's done. यहाँ पे आपके पास एक option आ रही होगी. I'm actually trying to look for that. Can anyone figure out? Can anyone see if they can find where Spark Lines is written? Yeah, I think it's there. Yeah, it's here. So why can't I remove it? Achha, yeah. So now let me show it to you how it's done. So basically, आप करेंगे क्या? You go to the Insert tab here, and you've got an option here of Spark Lines. अभी Spark Lines में क्या होता है? You can see the description here. Spark Lines are mini charts placed in single cells, each representing a row of data in your selection. अब ये देखें rows, इसलिए data को मैंने इसलिए rows में arrange किया है क्योंकि आपका जो charts बनेंगे ना, they're going to be based on rows like this. अब अगर आपके पास let's say इस तरह से 15 values भी होती different, आप उन सब के इस तरह से ना trend show कर सकते हैं अलग-अलग से in different cells. So you have multiple options here. You can either make line charts or you can make column charts. So you can actually make both of them. ठीक है, column भी बना सकते हैं, line भी बना सकते हैं. अब यहाँ पे क्योंकि we're talking about time, the time के अंदर we discussed earlier that we should be making line charts. तो अब क्या करेंगे? You can click on this line chart button here. First of all, you have to give the data range. ठीक है, आप सारी रोज जिसमें आपने सारी स्पार्क लाइंस बनानी है, आप वो सारी रोज को इकट्ठा सेलेक्ट कर लेते हैं. आप इन सारी रोज को इकट्ठा सेलेक्ट कर लेते हैं like this. ये आपका डेटा आ गया सारा. All right, and then you have to choose where you want to place the spark lines. You want to place them here in cells के अंदर. ठीक है, इन हर लाइन की स्पार्क लाइन जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे सेल में शो हो जाएगी. You click on OK, and you have these different lines shown there. So it's actually showing, these lines are actually showing you the trend for each of those rows there. ठीक है, so फैसलाबाद, गुजरांवाला, इस्लामाबाद सब का आपको यहाँ पे ट्रेंड शो हो रहा है in these spark lines there. ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल उसको फ्रीज कर दूं, इसको यहाँ से फ्रीज इट हियर, इस पॉइंट पे फ्रीज कर देते हैं. व्यू फ्रीज पेन्स, so you can see that. तो यहाँ पे देखें ये spark lines, you can see the trend for each of these cities कि इसका जो है 3 सालों में क्वार्टरली सेल्स का ट्रेंड जो है किस तरह से चेंज कर रहे हैं, किस तरह से सेल्स वेरी कर रही है. And you can see for each of them separately. अब आपके पास let's say 15, 20 जितनी भी कैटेगरीज होती, जितनी भी टेरिटरीज होती, उनका सबका एक अलग-अलग चार्ट आपको यहाँ पे एक सेल के अंदर शो हो जाता. So sometimes it's difficult to show everything in one single graph, and this is useful in that case कि आप अपने टेबल के साथ ही, ये भी होता है अक्सर कि आप जो है टेबल वाली वैल्यूज शो करना चाहते हैं.
ठीक है, you're not interested in chart itself, आपका ज्यादा इंटरेस्ट है टेबल शो करने में, टेबल में स्पेसिफिक वैल्यूज शो करने में। अब उसमें क्या होता है कि टेबल आपका मेन फोकस होता है और उस टेबल के साथ आप ये छोटे छोटे ट्रेंड्स भी जो है ना साथ साथ दिखा सकते हैं, ठीक है। तो टेबल के साथ आपकी ये इंफॉर्मेशन भी साथ शो हो जाती है। So your focus remains on the values in the table, but आपके पास ये वाली ट्रेंड इस तरह से लाइन चार्ट के थ्रू भी शो हो जाता है। एंड दिस इज समथिंग दैट वी सीन अर्लियर एज वेल, आप लोगों को शायद याद हो। अब टेबल में अगर आपने वैसे ट्रेंड देखना हो ऊपर लोअर से हाई वैल्यूज का फॉर एग्जांपल, क्या कर सकते हैं आप, ये पूरा आपने सेलेक्ट किया इन रो को, इस रो को, गो टू द होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमेंबर हमने किया था, इसमें जाके आप ये भी कर सकते थे डेटा बार्स या कलर स्केल्स में आप ये सिंगल कलर वाला अगर यूज करें तो ये आपको देखें एक तरह से ट्रेंड शो कर रहा होता है। सो जहाँ पे लाइट कलर है दैट्स व्हेन इट्स द लोएस्ट वैल्यू इन दैट रेंज जो भी आपने दिए, और जहाँ पे डार्क कलर है they are the highest value, so you can see the highest values are somewhere there in that region. Sorry, what happened here? The highest values are somewhere there in this region. Similarly, you can do the same for each of these rows separately. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ना फॉर्मेट एंटर करके I can copy that on this row, this row, this row, this row, this row, this row. वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है मेरी सब रोज रो के ऊपर अलग अलग से अप्लाई होगी। तो इससे मुझे देखें ये जो हाईएस्ट वैल्यूज यहाँ पे शो हो रही हैं, यू कैन सी ऑन द ग्राफ देयर एज वेल, ये किस तरह से एंड के ऊपर ये सबसे हाईएस्ट वैल्यूज आपके पास दरमियान में आती है। एंड सी यू कैन सी द ट्रेंड हियर एज वेल, लेकिन दरमियान में दो वैल्यूज हाई होती हैं, फिर दो लो होती हैं, फिर दो हाई, फिर दो लो। यू कैन सी ऑन द ग्राफ एज वेल, दरमियान में दो आपके पास हाई क्वार्टर्स आ रहे हैं, फिर लो क्वार्टर्स आ रहे हैं, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। तो आपको वो सीजनल ट्रेंड आ रहा है। समर के अंदर जो Q2 और Q3 समर वाले मंथ्स हैं उसके अंदर योर सेल्स आर गोइंग अप, और विंटर में दे आर रिलेटिवली डाउन। ऑलराइट, so this is actually it for today. So this is all we wanted to discuss. Let me actually think. I was actually thinking about one other thing. एक small pointer मैं mention करना चाह रहा था. Let me think about it for a minute. But in that time, let me know if you have any questions. You can ask right now. And that's pretty much going to be it for today. Otherwise, let me just think about another thing that was in my mind that I thought I should mention, and it might be helpful. Let's see what I was thinking about. So we've discussed these things. Yes. Yeah. So each charts पे discuss कर दिए. Yes. So that's what I was thinking about. So यहाँ पे देखें, एक चीज तो मैंने आपको बताया, ये एक तरीका है कि आप टेबल के साथ आपका फोकस टेबल पे रहे और उसके साथ आपने ये ट्रेंड भी शो कर दिया, ठीक है। Sometimes what you want is आपने कोई चीज प्रेजेंट करनी है, instead of the table being the focus, you want the focus to be your chart. You want the focus to be on your chart. So you could have a chart like this, ठीक है। अच्छा ये नहीं, ये तो उसकी सेंस की बन रही है, वो वाला नहीं है, फॉर्मेट पर चेंज करना पड़ेगा। Let me actually copy it, copy this data, copy this pivot table and change it a bit. इसको मैं नीचे बना लेता हूँ. So I've got this other pivot table. इसका मैं फॉर्मेट वो करता हूँ कि in my columns, for example, I've got this. Rows के अंदर I've got year and quarters like this. The format like this. ठीक है. Sorry, this was the pivot table that I was looking at. और इस पे मैं लाइन चार्ट बना लेता हूँ उसी तरह से. देखिए, रिमेंबर लाइन चार्ट बनाने के लिए दोबारा से क्या किया, रोज में ले आया हूँ मैं इसको, टाइम वाले वेरिएबल्स को, और बाकी जो मैंने डिफरेंट कलर्स में शो करना था वो मैंने इस तरह कॉलम्स में कर दिया. सो व्हेन आई क्रिएट अ पिवट चार्ट नाउ, इसमें मैं लाइन चार्ट बनाता हूं. इट्स गोइंग टू लुक लाइक दिस,
And now let's say what I wanted was, I wanted the focus to be on my chart. ठीक है, मैं chart show करना चाहता हूँ mainly. But इस chart के साथ I'm also interested in the actual values that are appearing there. So, देखें chart से actual values तो मुझे नहीं नजर आ रही. मैं ये chart अपनी presentation में डालता हूँ कहीं पे. I could not really, pinpoint the specific value. So one way would be कि मैं जाके एक value पे click करूँ, तो मुझे जाके वो शायद वो पता चले, या वो उस पे hover करूँ mouse, तो मुझे अपने पास ये नीचे value show होगी इस तरह से. ठीक है, that's one way. Another way is कि आप जो है data labels add कर दें इस तरह से. आप यहाँ पे right click कर दें और इधर आपके पास option आ रही होगी add data labels. आपको से numbers show कर देगा. But if you were to do it for all of these, like this, कि मैं यहाँ पे जाता हूँ डिजाइन टैब में add chart element और ये data labels में अगर add कर देता हूँ, so you see I've got like 12 into 7, that's 60 plus 24, I've got 84 different values shown here. और मुझे क्या नजर आएगा कि कुछ क्या लिखा हुआ, right? So it's not going to be readable at all. अब इसमें chart के साथ ना एक तरीका होता है, यहाँ पे एक option होती है, let me show that to you. So I've got this chart like this. So let's say मेरे पास ये सारे show हो रहे हैं, and I can go to data labels and remove them. So I've got these different trends, right? अब इसके साथ मुझे क्या करना था, let's say मुझे values भी show करनी है. इसके लिए आपके पास option होती है यहाँ पे एक add chart element में जाके data table. ठीक है, तो data table में आप क्या कर सकते हैं, you can add a table below that there as well. तो आपको chart भी नजर आ रहा है पूरा, और नीचे जो है ना आपके उसी के साथ exact values भी सारी आ गई हैं. So you can increase the size here. Legend आपका यहाँ पे भी आगे देखें, colors की information सारी. मैं इस वाले को right side वाले को remove भी कर सकता हूँ. इसको मैं select करके मैंने इसको delete कर दिया. Colors तो मेरे पास already नीचे आ ही रहे हैं. Right? मैंने इसको delete कर दिया. I get something like this now. Right? So now the focus is on the chart. ठीक है, chart नजर आ रहा है, but if I want to look at the exact values, I can go there at the bottom and look at the table as well कि अच्छा वो exact values क्या थी. Colors मेरे पास show हो रहे हैं, different colors क्या represent कर रहे हैं. Okay, so this table at the top, the focus remains on the table, and we have some charts there in addition to that. And the table below, and the chart below there, the focus remains on the chart, but then I have the exact values shown there as well. All right, so that's it for today, and that's it for our course as well. So we finished today here, and I'm here for any questions. If you have any on any part of the course, या कोई और कोई आपकी बात करनी है, कोई feedback हो, so please let me know. So any questions first of all on what we've done, Abhi? Okay, so I suppose there are no questions. So if there are no questions, we will probably end here, and we don't have anything else to discuss as such. It was great teaching all of you. It was great teaching all of you, and it was a great experience for me as well. So this was the first time I'm teaching this course online. There are a lot of challenges in this case. ऑनलाइन में ऑफ कोर्स आप लोग स्क्रीन शेयर पे देख भी रहे होते हैं, इसको साथ साथ आपको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करनी होती है, तो it's relatively harder as compared to in-person classes like this. उसमें आप easily कोई प्रॉब्लम किसी को आ रही हो तो वो debug करना भी जो है relatively आसान होता है. यहाँ पे if you get any problems तो मेरे लिए भी थोड़ा सा उस तरह से देखना मुश्किल हो जाता है कि अच्छा exactly आप कहाँ पर जो है you're having any issues. I just wanted to say thank you so much. I really enjoyed the course. I'll be honest, I need to practice some
previous courses because I wasn't able to get time due to my tough office routine. So I just wanted to ask that all the material in terms of videos and classroom material that you put on Google Classroom, that going to be there in the future? Yes, so you have access to this. I'm not going to remove any of that. So it is going to be there. So classroom की access आपके पास होगी. At least for a few months, you can say. जब तक मुझे वो data Right. अपनी storage का मसला कोई नहीं होता, it's going to be there. But if you want to have it for longer as well, you can just drop me an email or a text message or WhatsApp पे कहीं पे भी, and I'll keep it there. Or you can just download whatever you want to. YouTube videos are going to be there as well, so वो भी आप जो है उनको access कर सकते हैं, तो उसमें कोई issue नहीं है. All right, thank you so much. And one last thing, the certificates you mentioned in the WhatsApp group that someone from the administration will take care of it, right? Yes, so the person who you registered through, जो ITU में, I guess Professional Development Center जो भी है, you actually registered through them, right? So Right. instructors do not really have a direct say in that. ये administration जहाँ पे आपने start में register किया था और fees submit किए थे जिनके through, वही जो है certificates वगैरह ये सब deal कर रहे होंगे. तो maybe you can Alright. drop an email to Miss Sundas. आप बिल्कुल start में जब उन्होंने मुझे introduce कराया था, आपको उनसे भी email आई थी, if you might remember. जी बिल्कुल, मैं I'll get in touch with her. Thank you. Yeah, so you can just drop her an email and she'll probably she'll most likely get back to you. Okay, thank you so much. ठीक है, thank you so much everyone, and Thanks, before sir. we end, I'll just request all of you to just share your feedback as well on the course. Anything, so you can mention the things that you liked about the course, and anything that you think could be improved or we could spend perhaps more time on. I'll really like to have the feedback. What I'll do is I'll also post a Google form that I request all of you to fill, asking you feedback on some specific things, so that we can improve this course in the future whenever it's offered again. Or इसमें जो advanced इसका एक second part of the course is also going to be offered. We'll just want some feedback on that as well. If there are any specific things that you think should be covered in an advanced course in Excel, for example, for now, what we have in mind is some spreadsheet modeling that is going to be covered there, and some more advanced things related to power pivots in Excel. So those are the two things that are in mind specifically, but we'll want feedback on anything else as well that you think should be covered in a more advanced course. So feedback like that, I'll be requesting that from you over Google form. But if you want to say anything in a few words right now as well, that's also welcome. Sir, it was a great experience. मुझे बिल्कुल एक्सेल का इतना आइडिया नहीं था, बट आपने बहुत अच्छे तरीके से थॉरली एक एक चीज़ को, एक एक कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर जिसे कहते हैं ना समझाया है. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. और मैं चाहूँगी कि जो आप कह रहे हैं कि एडवांस कोर्स आएगा, तो उससे भी ये पूरी कोशिश होगी कि मैं ज्वाइन करूँ, ताकि मेरी एक्सेल पे बिल्कुल भी, अभी भी मैं साथ साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ. कहीं कहीं जगहों पे एरर्स भी आते हैं, लेकिन मैं खुद से ट्राई करती हूँ. तो जस्ट आपकी वजह से जिस तरह आपने सिखाया, तो वो एरर्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं. अभी बिल्कुल उस तरह की कमांड नहीं आई, लेकिन जिस तरह विद प्रैक्टिस जो है बिल्कुल इंशाल्लाह ताला completely आ जाएगा. It's just because of you. Thank you so much, sir. All right, thank you so much, Shagufta, for that feedback. I really hope that it becomes useful for you in your future as well, wherever you're working, and it helps you become more efficient in your work, and it helps you accomplish a lot more as well. और जो आपको specific issues आ रहे हैं, this is an advice for all of you, कि आपको ये issues सिर्फ एक तरीके से resolve होंगे, and that's practice. So जितनी आप ज़्यादा practice करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको practically use करेंगे, you will get better at it. That's the only way to improve here.
यस सर। और सर एक और बात पूछनी थी सर, वो कोर्स से ज़रा हट के है। सर मैंने अप्लाई किया जीसी में MSCS के लिए। सर मेरा टेस्ट है 19 को सितंबर को। सर क्या आप उसके लिए कोई बुक रिकमेंड कर सकते हैं? वैसे तो मेरे पास नए डाउनलोडेड बुक्स हैं जिनसे मैं तैयारी कर रही हूँ सर, लेकिन अगर आप कोई कर दें। I unfortunately do not have any idea about their tests, and my own background is not from computer science specifically. So I think I would not be the best person to recommend something on that side. नो प्रॉब्लम। Okay. थैंक यू सर। Anyone else would like to share any thing? Any feedback or any questions? Okay, so Shehzad Sab, I mentioned about the advanced course. Yeah, so I'll be getting some feedback from you as well on that. We will most likely be offering something on that. But of course, advanced course ke liye, we would need participants to have some background knowledge. So it really depends on how many people sign up for that. So uske upar depend karega if we're actually able to launch that or not, because we're only 8 people here. So we'll need at least this much for the next course. So it depends के हमारे पास काफी registrations आती हैं from people who have the necessary background knowledge. So next course के लिए people will be required to know everything that we have covered in this particular course, and not everything, but many of the things that we've covered in this course will be required there. So वो एक हमारे पास एक उसके लिए bottleneck है. So if we have enough registrations there, we will most likely be offering that as well. उसके अंदर जो अभी दो टॉपिक्स जो हम अभी सोच रहे हैं वो मैंने आपको बताए हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जो हम कवर कर रहे होंगे. That's basically spreadsheet modeling and power pivots. उनको यूज कर रहे होंगे. उसके अलावा जो है there are some things that are in my mind. I'll be getting feedback on that as well when I'm preparing the course outline. So that's basically about it. About the contact of Miss Sundas, let me actually just search for it and respond there in the chat box. सर मैं मैम सुंदर्स का ईमेल शेयर कर दूं ग्रुप में अगर आप कहते हैं, क्योंकि मैंने एक और कोर्स भी ज्वाइन किया हुआ है ना, तो मेरा Okay. उसका सर्टिफिकेट आ गया, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप ITU में आकर ना आप अपना रिसीव कर सकते हो मेरी ईमेल पे। उनको मैंने ईमेल की थी, तो मैं उनका ईमेल शेयर कर सकती हूँ अगर आप कहते हैं। Okay, all right, great. So I'm actually writing the email address here as well. It'll be great if you can share that on the group as well. So this is her email address. मैंने यहाँ पे लिख दिया chat box में. You can also just copy this if you want. ठीक है? Anything else? Any other comments on anything? All right, thank you so much everyone for joining. I'd really recommend that those of you who have missed any classes or anything, you go through the material again and try to basically get better at it. You know, this is something that's really, really useful in practical life. कहीं भी जाएंगे, this is something that people will be expecting कि अच्छा ये तो आपको सारी सब चीजें आती ही होंगी. So that's how important it is कि मतलब ये ऐसी चीज है कि आप लोग आपसे मतलब ये समझते हैं कि एक तरह से अंडरस्टूड चीज है कि दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो ऑफ इन एनी केस. आप किसी भी फील्ड में हैं, ये इतनी इस तरह से बेसिक्स कंसिडर किए जाते हैं
कि आपको पता होना चाहिए. So I hope it help you improve some of those employability skills that I'm talking about, and I hope it helps you in your future. On that note, we'll end, and सर hopefully, लास्ट 2 वीडियोस अपलोड कर दीजिएगा सर. yes. So I'll be uploading all of these 3 videos. Inshallah, I'll try by tonight. Inshallah, थैंक यू. जो है upload हो जाए inshallah by tonight. ठीक है. Thank you so much. We'll end here. Allah Hafiz. Take care of yourself, and we'll hopefully meet again sometime. Allah Hafiz.